Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. And today, many days after, I'm coming for making video here. Snake Park, Chennai में है. So Snake Park में हम आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए. So हम रेपिडो से आया था. So आप लोग को दिखाने वाला है रेपिडो से कैसा आया था और कैसा हम इधर पहुंच गया. So स्नैक पार्क का बाहर में ही है. So अभी आप लोग को दिखाने वाला है रेपिडो से कैसा आया था. इसके बाद ये शुरू होगा. They are the largest of all land dwellers. They are the natives of South Asia that are on trees and this began in 1882 after 70 years. अभी खत्म हो गया एनिमल्स का 40 स्टैचू का. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो हम जा रहे हैं रेपिडो से अभी रेपिडो पिकअप करने ऑलरेडी आ गया. हम स्नैक पार्क देखने जा रहे हैं. आप लोग को दिखाने वाला बहुत सुंदर है. सो ऑलरेडी इधर आ गया रेपिडो. सो रेपिडो से हम जाने वाला है. सो गाइस पहली बार हम जा रहे हैं रेपिडो बोल रहे हैं इधर. सो रेपिडो चलता है. तो रेपिडो से हम जा रहे हैं स्नैक पार्क पे. तो ये भैया लेके जा रहे हैं. तो हम ये हेलमेट दे दिया. वाह थोड़ा पुराना हो गया. इसको क्लाडिंग देना है नहीं तो दूसरा लेना चाहिए रे. ये मुझे ये पहनवा दिया नहीं तो पुलिस ट्रैफिक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इसीलिए हम ये पहन लिया इसकी सेफ्टी के लिए. तो कैसा लग रहा है ट्रैफिक ऑफिस हम यहाँ जा रहे हैं. कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए. मेरा पहले एक्सपीरियंस है ऐसा बाहर में अभी मिल रहा है. और इसके अंदर एक बार भी लेके आए नेक्स्ट टाइम से ऐसे लेके जाना बहुत अच्छा लगता है. तो सिंगल रोड सो नाइस. सो फ्री एरिया. इस तरफ क्या है. हाँ देखिए हम लोग शॉर्टकट आ गया इधर से. तो ये है ऑलरेडी पहुंच गया. वाओ सो स्वीट. तो फ्री है कि नहीं पता नहीं. तो अनिल थैंक यू. सो ये 1 सेकेंड में मुझे ड्रॉप कर दिया. सो स्वीट. तो थैंक यू सो मच. योर नेम ब्रदर. मोहम्मद. सो मोहम्मद भाई ने मुझे ड्रॉप किया. सो हेलमेट दिया. प्लीज़ ओपन इट. ओह नो थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हम कैश पे करना है. वेरी गुड. 30 रुपीज़ दे दिया. ओके बाय. सो ये है. सो फाइनली हम पहुंच गए. अकेला इधर अलाउ है कि नहीं पता नहीं है. सो इधर ड्राइंग करके रखा है क्या क्या दिखाई मिलता है बट ये सच है कि नहीं पता नहीं है. तो सबसे पहले आप लोग को दिखाने वाला है इधर जिंदा ड्रैगन लग रहा है सबसे सुंदर. देखिए मुँह हाथ में घुसा देगा नहीं काटते है. सो स्वीट. सो आप लोग को पिक्चर दिखाने वाला है. इधर जितना ड्राइंग करके रखा है ये सब उधर आप लोग को अंदर में दिखाई मिलेगा. आप लोग को ये देख के लग रहा होगा लकड़ी है बोल के. लकड़ी नहीं है ये मेनली पक्का से बना हुआ है. देखिए कितना सुंदर से. सो ये मेन गेट क्लोज करके रखा है. हम अभी जाने वाले हैं एंट्री करने के लिए. टिकट लेने वाले सबसे पहले. देखिए वो सो स्वीट. डियर आई एम फ्रॉम इंडिया. आई एम इंडिया असम. या हाय. Oh, they are asking which country. I'm from India and I'm from Assam. So इधर सामने में कुछ खाने के लिए क्या क्या है. पार्किंग प्लेस एवरीथिंग इज़ देयर. सो अभी इधर से घूम के अभी हम जाने वाला है टिकट लेने के लिए. एंट्री पास कटिंग करने के लिए. सो अलाउ है कि नहीं अंदर में इसको भी पूछना पड़ेगा. सो हम परमिशन ले लिया. इसके बाद वीडियो अलाउ है. सो चार्ज लेता है वीडियो बनाने के लिए. नो सर वीडियो बनाने के लिए भी चार्ज है ना. कितना. ओनली मोबाइल चार्ज. कितना मोबाइल चार्ज का. 10 रुपीज़ 20. सो मोबाइल का 20 है. सो जी ने बता दिया. सो स्वीट. सो टिकट काउंटर में. ओके नो प्रॉब्लम. ऑलरेडी मेरा टिकट ले लिया. 40 रुपया 20 रुपया मेरा और 20 रुपया फ़ोन का चार्ज है वीडियो बनाने के लिए. सो ये ओपनिंग टाइम और ये प्राइस मेरा 5 रुपया ज़्यादा ले लिया. सो अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ. सो आप लोग को दिखाने वाला है. सो ऑलरेडी जी ओके थैंक यू. सो टिकट ऐसा फाड़ते हैं. टिकट ऐसा फाड़ देता है क्योंकि नहीं फाड़ने से विदाउट एंट्री नहीं होता है. Head south. Head south at the destination. डेस्टिनेशन क्लियर. सो इंस्टेड आ गया. सो
हम जा रहे हैं उस तरफ। सो हम लोग का ये नोटिस एरिया में ज़्यादा होता है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में। सो हम लोग टोकू बोल रहे हैं, इंग्लिश में पता नहीं, टोको पट्टा, टाक, गालों में टाक, टोकू ऐसा बोलते हैं। सो बहुत सुंदर से इधर भी लगा कर रखा है। सो अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर में क्या क्या पता नहीं। सो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस तरफ जाके देखें उस तरफ क्या है। Destination is on the right. तो देखिए आप लोग मछली, सबसे पहले मछली देख लिया। ये नाम क्या है पता नहीं इसका नाम, आजा बेबी टूटू। और इसका बाद ये मगरमच्छ, देखिए छोटा सा एक मगरमच्छ है, अंदर में मरा हुआ है ना जिंदा हुआ है पता नहीं। सो ये देखिए कछुए, हाय हाय डार्लिंग, इधर आओ। इधर खाली है, इधर नहीं है। सो ये लोग को तो नहीं लगता है जिंदा है ना मरता हुआ है। इधर भी देखिए सागर का मछली, और नो, और इस तरफ भी है, ये डिफरेंट टाइप का है। इधर सिर्फ बालू रख के रखा है, पानी नहीं है। इस तरफ थोड़ा पानी रखा है पीने के लिए। और ये कछुए, और ये देखिए। तो ऐसा चीज़ बहुत इधर बंद करके रखा है। सो आप लोग को दिखाने वाला है एक एक करके। सो बने रहे वीडियो के, बहुत मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही अलग किस्म का सो एनिमल्स का वीडियो बनाने आए हैं। कहाँ क्या है हम तो पता नहीं है, मेरा कोई भी गाइडिंग करने के लिए भी नहीं आया है। सो हम अकेला है। सो अभी तो हम पता नहीं है कहाँ क्या है। सो हम घूम के आप लोग को दिखाने वाला है। सो कहाँ क्या है सर्च करने वाला। ओ अंदर बट ओ इसका अंदर में सब सीढ़ियाँ है। सो तो आप लोग को जूम करके दिखा दिया क्योंकि अंदर अलाउ नहीं, बहुत क्लोज से देखे बराबर। और ऊपर में भी, और देखिए क्या क्या पंछी है इधर। इसका नाम इधर सब लिख कर रखा है। सो नाम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है। सो आप लोग को थोड़ा दिखाने वाला है बैक कैमरा से। तो इसका अंदर में देखिए बर्ड, देखिए लाइव में ऐसा पंछी अभी तक एक बार भी हम नहीं देखा है। पहली बार ये लाइव देख रहा है। डिस्कवरी में देखा है लेकिन ऐसा लाइव में नहीं देखा है। सो ये पहली बार हम देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नो, सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है इधर इस तरफ, डियर है, डियर हरिन। ये हरिन देखिए वो खाने के लिए इस तरफ बन देख रखा है, अंदर खा रहा है। इधर एक बाहर आ गया एक, सो स्वीट मुन्नू। बोर्ड है इधर, छोटा छोटा हरिन। कहाँ से चेन्नई में आ गया रे, कहाँ इतना सुंदर सुंदर हरिन है। और देख सकता है। सो इधर से मिल गया दो भाई, गैद नहीं मिला था। नेम व्हाट इज योर नेम? My name myself Chandru and mine Praveen. Praveen. Then हिंदी ऑल्सो ओके? Yes, I can understand. Yeah. मैं तो हिंदी बात करता है। हाँ, नहीं तो दूसरा इधर हिंदी पता नहीं है। ये लोग तो हिंदी बहुत, तमिलनाडु में हिंदी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। 99% आई थिंक, या 99% इधर हिंदी कम है। हिंदी कम है। ओनली तमिल, local चलता language है। and English. English is mostly no, English and Tamil. Tamil and Yeah, English. Tamil and English. They are not using Hindi or on mother tongue. Only they are using. So okay, bye. Thank you. सो वो लोग भी घूम रहे हैं। सो मुझे मेन गेट में वो लोग मिला था। सो आगे क्या है देख लेंगे। सो आप लोग को भी दिखाने वाला है बहुत सुंदर से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सो हम ज़्यादा बात करने से ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगा, इसीलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। ओनली आप लोग को दिखाने के लिए आए। सो आप लोग को दिखाने वाला है। सो बिग, सो इंडियन क्रेस्टेड। इधर देखिए, नो 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 नो, कोई बोलता है इसका पंख उड़ता है बोल के, पता नहीं, हम भी डर रहे, नहीं उड़ता है, बहुत अच्छा है। सो बेचारा वो लोग भी बाहर जाने के लिए दिल होता होगा, फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम नहीं है आप लोग का। वाओ, पीप और पीकॉक। हम लोग बचपन में सिर्फ किताबों में देखता था पीप और पीकॉक बोल के, लेकिन आज लाइव में देख रहा है। ये देखिए मंकी, देखिए सिर्फ 2 मंकी है इधर। हाय, हेलो दोस्त, हेलो हेलो मंकी। ये नहीं देख रहा है, हाँ देख रहा है, इसका आँख फट गया है, इसको इसीलिए सेपरेट से रखा है। अंडा बहुत डूब गए, दोस्त लोग के साथ बैठने नहीं मिल रहा है, एक आँख फट गया है इसका। आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी, यू नो वन थिंग। सो वी कैन टेक रेस्ट हियर एंड वी कैन एंजॉय विथ एनिमल्स, विथ बर्ड्स, एवरीथिंग। So sweet. So I like this. So there is small birds. बिस्कुट दिखाई नहीं देगा, जाली लगा हुआ है अंदर में। इधर तो आदमी के सामने तक आ जाते हैं, दर्शन नहीं रहे। ओनली 2 पीसेस देयर। हाय,
Hi, darling. Oh, this side. See, so sweet. ये आदमी को डरता नहीं है, तो बाहर तक आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छा एनिमल है। उठो, ये नहीं उड़ रहा है। ओह नो, रियली अमेजिंग, इतना ही बड़ा है, लेकिन ये उस तरफ एक बड़ा वाला है, 3 है उधर, सबसे बड़ा वाला इधर दाग है। सो इसका बाद ये जो अराउंड देखा जाता है, अंदर में ऐसा कुछ है लास्ट एरिया में। सो बैठने के लिए, झूला करने के लिए, जिसका बच्चा लेके आता है वो लोग इधर एंजॉय भी कर सकता है, फुल एंजॉयमेंट। सो ऑल भालू है, देखिए क्लीन। पहली बार वाइट पीकॉक, ओ जो फिल्मों में दिखाया था ना, रामायण जहाजा में, ये वाइट पीकॉक। ओह, उड़ गया रे एक। उड़ो भाई लोग, उड़ो। ओह, वो प्ले कर दिया ऑलरेडी। तो अंदर में हम लाइव देखने जा रहे हैं एनिमल्स का। ओके भाई, सो अंदर जा रहे हैं। A substantial area is surrounded by vegetation, of which a major portion has been claimed by human community. To a common man, these endless expanse of tree cover means forest. A deeper analysis of this composition reveals the character of any forest. Such characters are grouped and designated as moist deciduous, dry deciduous, semi-evergreen, evergreen, shrub, mountain, अंदर and so में on. क्या कैसा फील्स कर सकता है अंदर में जंगल का, तो आप लोग को देख के मेरे से दिखाने वाला है। तो बता रहे हैं एनिमल्स के बारे में। सो 20 मिनट का समय है, नाम दिखा मिलेगा जो है सब कुछ। Natural sizes in these regions. Let's enter the deciduous forest now. Listen carefully. They are the largest of all land dwellers found here. सो अभी ये बात बता रहा है अबाउट एलिमेंट 40 करेक्टर का इधर अभी देखा मिलेगा। तो तोरा ले दोगा ये आप लोग 40 करेक्टर का ये इधर देखा मिलेगा। आप लोग देखते रहे, आप लोग को दिखाने वाला है। ये देखिए, डर गया। हम अकेला है अंदर में। सो स्वीट। Mammals are everywhere. There are some mammals specially designed to spend most of their time on trees. They are called arboreal mammals. Look on the branch above. It is a larva giant squirrel. ये देखिए, It's a typical स्क्विरल अवार्ड। They are swift and agile on trees, and the speed in which they move about on trees is truly amazing. Have you ever heard a call like this? Oh, don't get frightened. It's the usual call of a barking deer, also known as the Indian moonjack. They are mostly herbivores, but opportunities and compulsions sometimes make them scavenge on leftovers of carrion. It has a pair of upper canine teeth that looks like tusks, which is often used for defense. Deciduous forests are generally a paradise for birds. Look at this long-tailed bird. It is aptly known as the paradise flycatcher. ओह, बात छोटा बात। It's a member of the flycatcher family. It specializes catching insects and flying. और जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं छोटा बात, इसके बारे में अभी बता दे रहे हैं। The tail following it is really fabulous to see. Not all birds are easy to see. Here is a skulker, the Indian pitta. It spends most Dragon of the pitta. time on the forest floor or under dense underwood, foraging on insects in leaf litter. It has long पानी and भी है रे। strong legs, a very short tail, and a stout bill. They are extremely powerful and unmistakable. Among birds, there are some which are highly specialized in catching fish. They have been named perfectly as kingfishers. Look at the one in front of you. It is a white-throated kingfisher. They are typical kingfishers and have a large red bill. This species mainly hunts large crustaceans, insects, earthworms, rodents, snakes, fish, and sometimes frogs.
They nest inside hollow of earth cuttings or in the banks of rivers with a 3-foot tunnel entrance. Close to the domestic fowls are the great jungle fowls. Look at the one feeding on the forest floor. Great jungle fowls are endemic to India and is more or less confined to peninsular India. The red wattle on either sides, the comb on the head and the sickle-shaped अब ये मुर्गी के बारे में अभी बता रहे हैं हम लोग का इंडिया में भी है जंगल में और हैंड अबाउट हैंड Close relative of the magpie robin and the perfect forest dweller is the white-armed shama. Take a close look on the bamboo. Yes, it's a white-armed shama, an amazing songster. Its capability to mimic sounds of other birds. ये आप लोग जो सुनाई दे रहा ना जो एनिमल्स का साउंड है ये इसका साउंड है ये There are millions of South Asian countries including India and Sri Lanka. Any medium-sized bird in yellow always reminds us of an oriole. What you are seeing now is the Indian oriole. The male is golden yellow in color with a black eye stripe extending behind the eye. A major population of these birds are resident to India and others are migratory. The green-winged bird you are watching now is the emerald owl. It is a state bird of Tamil Nadu. The beautiful ये जो ये बर्ड है ना ये तमिलनाडु में है तो इसके बारे में बता दे रहे हैं distinguishes it. Its flight is fast with regular wing beats and their dashing flight through the forest cover is simply amazing. Look at these little booties. कहाँ भाग They are one of the most amazing group of insects coming under the order Lepidoptera, which includes the butterflies and the moths. Butterflies are diurnal and they live on nectar. butterflies. There are hundreds of species found here and this is the representative species called the chocolate pansy. It's a member of the butterfly का बात में अभी बता दे रहे हैं exclusive forest species. Among the group of reptiles, one of the most remarkable and an expert in deception is the Indian chameleon. Chameleons are distinguished by their two-toed opposable legs. अभी वो अंदर चला गया कौन सा बात दिखाई दे रहा है पता नहीं highly modified rapidly extrudable tongues is exclusive to its clan. They are extremely sluggish in their movements, but their ability to change colors according to the surroundings. इसका सेंस क्लाउड होते रहता है बोल रहा है ability to sense his cloud. There are many life forms which we hardly notice when we trek through the forest. Some of them attract us due to their shape and color. One such organism is a bracket fungi or shelf fungi. They are among the many group of fungi that comprise the phylum Basidiomycota. They produce shelf or bracket-shaped rooting bodies called conchs that lie in a close planar grouping of separate or interconnected horizontal rows. They are robust and often semicircular in shape. Look at this tiny insect. It's a beetle. Beetles are everywhere and they form one of the largest order called Coleoptera, which means sheath-winged in Greek. There are over 4 lakh species of beetles and many new species are being discovered frequently. Spiders also form a major group among the class Arachnida. Spiders इसका बारे में अभी बता दे रहा है Among spiders, the one you are seeing now on the tree trunk is the tiger spider or a bird-eating spider. Its size and color, hairy appearance and the ambushing nature must be the reason why it's called a tiger spider. Many invertebrates make their appearance in the cover of darkness. Here is a typical example, the scorpion. It's an arthropod and belongs to the class called Arachnida, comprising of over 1 lakh named species. They are predatory animals and possess 8 legs and are easily recognized by the pair of grasping claws and a narrow segmented forward-facing tail covered over its back. Look at this strange object. It's a honeycomb. ये मधुमक्खी This mass of hexagonal wax cells where a whole generation of bees thrive. Honeybees transform nectar. 4 जनरेशन पहले से ये मधुमक्खी हम लोग का आर्ट में है तो इसके बारे में बता दे रहा है They store it as a primary food source in wax honeycombs inside the beehive. Have a close look inside the rock cavity. They are found in most of the undisturbed forest areas. This is the only species of देखिए भालू found in the peninsular India. It is omnivorous and feeds mainly on termites. वो अंदर में देखिए भालू है भालू भालू सो रहा है इसका साउंड ऐसा सुनता है वाह hardship of bee sting, the bears relish feeding on honey. Forests are home to one of our most successful and stealthy predator, the leopard. Leopards inhabit any habitat where their prey is plentiful. These spotted cats are highly camouflaged in their shadowy forest rows
where they prey on small mammals as big as spotted deer or a barking deer. When food availability is scarce, they even resort to feeding on smaller mammals and birds. Now let's see the richness of the evergreen forest. Jangos. Evergreen forests are rich by flora and fauna. Inside the dense cover of vegetation, there are amazing creatures, but seeing them is extremely difficult. See on the branch above, it's a line-tailed macaque, a highly endangered member of the primate family. The line-like tail and the hair at the tips have earned its name, the line-tailed macaque. Fruits of Polinia exarelata is its favorite. पानी भी अरे इधर लग रहा है रे अकेला Sustain the चला population of these macaques. इतना रात में देखो अकेला हम घूम रहा है ये An extremely rare mammal ये देखिए। found in the evergreen tracts of Western Ghats. It's a small ये solitary देखिए। animal and a member of the weasel family. जंगल का अंदर मैं अकेला हूँ As well as arboreal predators, feeding on rats, birds, and small mammals. The Indian marten is the oldest species of marten found in southern India. It occurs in the hills of the Andes and parts of ये the एनिमल्स इंडिया में भी है They are extremely rare to see. Bats are generally synonymous with light of the dark. There are several species of bats that live in and around us, of which some of them are insectivorous and some fruit eaters. Have a look at this strange looking creature. It is the rarest of the rare bat, known as Salimani's fruit bat. As the name suggests, they are fruit eaters. They were first discovered in the year 1948 and later 1948 में ये डिस्कवर किया था आदमी लोग हमने उसको डिस्कवर किया था in the Western Ghats. वो 1948 में Many species of mammals लोकल लैंग्वेज में पता नहीं हम लोग का लोकल लैंग्वेज में तो बाडोली बोलता है और हिंदी में पता नहीं a member of the Viveridae family. They are perfectly nocturnal and are inhabitants of the अभी evergreen कहाँ चला forest. गया They are arboreal predators, feeding on rats, birds, snakes, and even dead organic waste. Very often during the fruiting season, they resort to feeding on fruits of trees and become instrumental for their dispersal. Look at this snake near the rock. Among the group of reptiles, the most disliked group are snakes. Among snakes, some are poisonous and many are non-poisonous. But the general shape and movement of any snake or a snake-like reptile causes aversion, which leads anyone to end up in ये पहाड़ों की स्नेक है रे छोटा There are स्नेक several species of snakes which comes in attractive colors and sizes. All birds are not small. There are a few large birds that inhabit our evergreen forest. One such bird is the great Indian hornet. Have a look. It is one of the largest birds found in our forest. Their impressive size and color have made them important in many tribal cultures and rituals. They are prominently frugivorous, although there are opportunities. इसका साउंड सुन सकता है साउंड In spite of their size, they nest inside tree hollows where they conceal their female until young ones come out. In contrary to the size of the hornbill, here comes one of the smallest, the black and orange flycatcher, an endemic species found in the Nilgiris Small birds. and in the central and southern Western Ghats. The combination of orange and black makes this bird exceptionally beautiful. They are specialized to catch insects in flight and hence the name. Tree are common in most rural areas. There are two species, the repito and the white-bellied. Here is a white-bellied tree bird, a graceful bird with a long tail. The white and black combination with a mustard wash on its wings and in many Small South Asian countries. Black bulls feed mainly on seeds and insects, and they are often seen in small groups, either roosting or flying about in search of food. What you are seeing now is the black pasa. It is one of the most beautiful species among the birds of prey. They generally move about in groups hunting for small prey in open clearings in forests. In southern India, this species is regularly reported as a winter visitor. This species is found in Southeast Asia and parts of Southern Asia. Woodpeckers are the strangest among birds as they move about on vertical tree-trunks. This is a white-bellied woodpecker found in the evergreen forests of tropical Asia, Woodpecker. the Indian subcontinent and Southeast Asia. They are among the largest of Asiatic woodpeckers and nest in large wet trees, often beside rivers. और नीचे का बाड़ है ना वो और नीचे का बाड़ है वो Look at this nocturnal bird.
और ये उल, हाँ ए उल्लू क्या कर रहा है तो? It is completely nocturnal and becomes active after dusk hours. This species is distributed throughout Southeast Asia. It has a heart-shaped face with ear-like extensions. See this colorful butterfly. It is a line butterfly. Colorful. It is one of the largest and the most widely distributed butterfly in the world. It is found in the savannas, gardens, evergreen and semi-evergreen forests. Butterflies and moths are members of the same order Lepidoptera. हम लोग का भाषा में कॉमकी बोलता है, कॉमकी। इंग्लिश में बटरफ्लाई बोल रहे हैं, हाँ। Moths form a major species diversity among Lepidoptera, which also includes significant sizes. See this moth in the front. It is the Atlas moth. It is the largest among the group of moths which belong to the Saturnidae family. See this strange creature. It is the mantis. They are the tigers of the insect world. They prey on other insects using the mating game strategy. The mantis usually holds the prey with one arm between the head and thorax and the other on the abdomen. Then starts devouring it alive. There are over 2,400 listed species around the world. Around the world of plants, members of the Orchidaceae family have attracted people due to their attractive flowers. Take a look onto the tree. It is an orchid. There are several species of orchids living in different niches, and they have been categorized as terrestrial, epiphytic, and lithophytic. See these strange looking organisms. They are the lichens. They inhabit rocks, trees, and anything they can make around. क्या दिखा रहा है? A lichen is not a single organism. It's a stable symbiotic association between a fungus and algae. ये दिखा रहा है हॉर्न। Like all fungi, lichen fungi require carbon as a source of food. This is provided by a symbiotic algae. Look at this green frog. It's one of our gliding frog. It's a large-sized frog seen in moist localities. The deep red membrane between the toes and fingers is the key to its identity. They are inhabitants of most of the evergreen and wet forests. They can glide short distances from tree to tree, taking advantage of the membrane between the toes and fingers. This cryptic-looking creature of the forest floor is the rare and endangered Cochin forest cane turtle. This turtle inhabits dense evergreen forests, presumably at lower elevations. It was finally rediscovered in 1982 after 70 years. What you have seen here is only the tip of an iceberg. Any place we know about is a habitat of many organisms, and it can be a lifelong quest if we start taking interest in knowing them. A myriad of life forms exist in this world in various shapes, sizes, and forms. Some are colorful, some weird, some strange, some averting. All seems to be born in the same puddle of earth. Let's appreciate and protect these living legacies for our next generation. अभी ख़त्म हो गया एनिमल्स का 40 स्ट्रेचो का एनिमल 40 स्ट्रेचो का कहानी बता दिया, कब कौन सा डिस्कवर हुआ हुआ है, ये कहाँ पाउन हुआ है और ये कहाँ पाउन होता है और ये कहाँ में। तो हम लोग के इंडिया में भी 40 एनिमल का स्ट्रेचो का कहानी सुना दिया। सो हम बाहर निकलने वाला है। सो देखिए, हाँ डर जाता है रे कभी कभी, जब हाथी निकाला था तब ज़्यादा डर गया था। सो इस तरह है। सो ओके फिनिश गाइस। सो बाहर में ऐसा है। सो इसका अंदर में जो हम देखने गया था, इसके अंदर में था, ओ बहुत अच्छा लगा है। सो क्या करूँ, 2 सोना चाहिए था। ओके बाय। सो लैब में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और फर्स्ट टाइम ऐसा है अकेला, और फर्स्ट टाइम ऐसा घूम रहे। 20 मिनट में हम 40 एनिमल्स स्ट्रेच शो का कहानी सुन लिया। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा हुआ। सो क्या करो, बैटरी भी अभी नहीं है और दिखाने वाला था, अभी दिखाने के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो है अभी, लेकिन बैटरी शॉर्ट्स नहीं है, ओनली 5% इज रिमेनिंग। तो ऐसा अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सपोर्ट मी ऑलवेज। एंड जय हिंद, जय भारत।